शांतिकम वंदे श्री गुरु श्रीदापद कमलम श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूपं सारजातं सागर रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण प्रदान स्थापना ललिता श्री विशाखावतार नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवते विचारणे निर्विशेष नादिपाश्वरते स्वागते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिनाथ नमस्ते तत्कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण सुखदेवी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरवंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, thank you everyone for joining. I'm sharing the screen. इस श्लोक को तो कल कवर कर लिया था ना नवीन फ्लोर में. क्या प्रभु जी यथा आपो निवतस्तो में गते. आई थिंक हम यहीं रुके थे, यहीं पर रुके हुए थे. इन द एग्जीक्यूशन ऑफ योगा से स्टार्ट करना है. In the execution of yoga, it is very important that the mind is not agitated. Yatha deepo nivatastho nengate sopam smataha yogino yatha chittasya yunjato yogamatmana. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendental self. BG Bhagavad Gita 6.19. When a candle is in a windless place, its flame remains straight and does not waver. The mind, like the flame, is susceptible to so many material desires that with the slightest agitation, it will move. A little movement of the mind can change the whole consciousness. Therefore, in India, one seriously practicing yoga traditionally remained brahmachari unsteadily. Yes, very good. There are two kinds of brahmachari. One is completely celibate and the other is grhastha brahmachari. That is to say, he has a wife. He does not associate with any other woman, and his relations with his own wife are strictly regulated. In this way, either by complete celibacy or restricted sex life, one's mind is kept from being agitated. Yet, when one takes a vow to remain a complete celibate, his mind may still be agitated by sexual desire. Therefore, in India, those practicing the traditional yoga under strict vows of celibacy are not allowed to sit alone, even with a mother, sister, or daughter. The mind is so fickle that the slightest suggestion can create havoc. Sorry, Prabhu. Can next devotee can read? I'll read after that. Okay. Yes, Yeshua. The yogi should have his mind trained in such a way that as soon as his mind wanders from meditation on Vishnu, he drags it back again. This requires a great deal of practice. One must come to know that his real happiness is in experiencing the pleasure of his transcendental senses, not the material senses. Senses are not to be sacrificed, and desires are not to be sacrificed, but they are both desires and sense gratification in spiritual sphere. Real happiness is transcendental to material, sensual experience. If one is not convicted of this, Convinced. if one is not convinced of this, he will surely be agitated and will fall down. One should therefore know that the happiness he is trying to derive from material senses is not real happiness. Hare Krishna. हरे कृष्ण. अब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि मटेरियल सेंसेस का क्या मतलब है. जैसे आईज हैं तो मटेरियल सेंसेस ही तो हैं. इसमें डिस्कस कर लेंगे बाद में. बट ये एक अच्छा
point है कि one must come to know that his real happiness is in experiencing the pleasure of his transcendental senses. अब आँख तो एक ही तरह की है ना, मटेरियल सेंस ही तो लगती है देखने में, मैटर ही तो है, तो ट्रांसेंडेंटल कहाँ से आ गया इसमें, है ना? तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में. Okay, yes. Deepak Prabhu, you would like to read? Yes, no problem. Those who are actually yogis truly enjoy, but how do they enjoy? Ramante yogino ante. Their enjoyment is unlimited. That unlimited enjoyment is real happiness, and such happiness is spiritual, not material. This is the real meaning of Rama. As in the chant Hare Krishna, Hare Rama. Rama means enjoyment through spiritual life. Spiritual life is all pleasure, and Krishna is all pleasure. We do not have to sacrifice pleasure, but we do have to enjoy it properly. A diseased man cannot enjoy life. His enjoyment of life is a false enjoyment. But when he is cured and is healthy, then he is able to enjoy. Similarly, as long as we are in material conception of life, we are not actually enjoying ourselves, but are simply becoming more and more entangled in material nature. If a sick man is not supposed to eat, his eating unrestrictedly actually kills him. Similarly, the more we increase material enjoyment, the more we become entangled in this world, and the more difficult it becomes to get free from material entrapment. All of the system of yoga are meant to disentangle the conditioned soul from this entrapment, to transfer him from the false enjoyment of material things to the actual enjoyment of Krishna consciousness. See, Krishna says, यत्रोपरं ते चितं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यांतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यात्रा न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन करुणापि विचल्यते तं विद्य दुःख संयोग वियोगं योग समजनितम्. In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This is characterized by one's ability to see the self as a pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actually freedom from all miseries arising from material contact. Bhagavad Gita 6.20 to 6.23. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you. Nayan Prabhu, are you ready now? I will read at the end, Prabhu. Let Mataji read. Yeah. Okay. So, Kanak Mataji, yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. One form of yoga may be difficult and another may be easy, but in all cases, one must purify his existence in the to the conception of Krishna conscious movement, enjoyment. Then one will be happy. Yada hi nidrese tresu na karma anusajate sarv sankalp sannyasi yogara doso tadochate udharatet atmatma nat manan avasadet atmave he atmano bandor atmave ripur atmaha. A person is said to have attained to yoga when having renounced all material desires. He either acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. A man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Bhagavad Gita 6.4 to 5. We have to raise ourselves to the spiritual standard by ourselves. In the sense, I am my own friend and I am my own enemy. This opportunity is ours. There is a very nice verse by
Chanakya Pandit, no one is anyone's friend, no one is anyone's enemy. It is only by behavior that one can understand who is his friend and who is his enemy. No one is born our enemy and no one is born our friend. Those rules are determined by mutual behavior. As we have dealings with others in ordinary affairs, in the same way, the individual has dealings with himself. I may act as my own friend or as an enemy. As a friend, I can understand my position as spirit soul and seeing that someone or other I have come into contact with material nature, try to get free from material entanglement by acting in such a way as to detangle myself. In this case, I am my friend, but if even after getting this opportunity I do not take it, then I should be considered my own real worst enemy. Hare Krishna. Hare Krishna. Swati Mata. हरे कृष्ण बंधुरात्मना आत्मना मानस्तस्य येन आत्मवतम जितः अनन्तमानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्. For he who has conquered the mind is the best of the friends. But for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy. Bhagavad Gita 6.6. How is it possible for one to become his own friend? This is explained here. Atma means mind, body, and soul. When we speak of Atma, in so far as we are in the bodily conception, we refer to the body. However, when we transcend the bodily conception and rise to the mental platform, Atma refers to the mind. But actually, when we are situated on the truly spiritual platform, then Atma refers to the soul. In actuality, we are pure spirit. In this way, according to one's spiritual development, the meaning of the word Atma differs. As far as the Nirukti Vedic dictionary is concerned, Atma refers to body, mind, and soul. However, in this verse of Bhagavad Gita, Atma refers to mind. Intro. Yes, Prabhuji. Can you scroll a little bit? Yeah. If through yoga the mind can be trained, then the mind is our friend. But if the mind is left untrained, then there is no possibility of leading a successful life. For one who has no idea of his spiritual life, the mind is the enemy. If one thinks that he is simply the body, his mind will not be working for his benefit. It will simply be acting to serve the gross body and to further condition the living entity and entrap him in material nature. If, however, one understands one's position as spirit soul apart from the body, the mind can be a liberating factor. In itself, the mind is nothing to do. It is simply waiting to be trained, and it is best trained through association. Desire is the function of the mind, and one desires according to his association. So if the mind is to act as a friend, there must be a good association. Okay, this is a good point. We'll also talk about it probably later. Yeah, desire is a function of mind. The best association is a sadhu, that is a Krishna conscious person, or one who is striving for spiritual realization. There are those who are striving for temporary things, asat. Matter and the body are temporary, and if one only engages himself for bodily pleasure, he is conditioned by temporary things. But if he engages himself in self-realization, then he is engaged in something permanent. Obviously, if one is intelligent, he will associate with those who are trying to elevate themselves to the platform of self-realization through one of the various forms of yoga. The result will be that those who are sadhu or realized will be able to sever his attachment to material association. This is the great advantage of good association. For instance, Krishna speaks Bhagavad Gita to Arjuna just to cut off his attachment to this material affection. Because Arjuna is attracted to things that are impeding the execution of his own duty, Krishna severs these things. To cut something, a sharp instrument is required. And to cut the mind from its attachments, sharp words are often required. The sadhu or teacher shows no mercy in using sharp words to sever the student's mind for material attractions. By speaking the truth uncompromisingly, he is able to sever the bondage. For example,
At the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna speaks sharply to Arjuna by telling him that although he speaks like a learned man, he is actually fool number one. If we actually want detachment from this material world, we should be prepared to accept such cutting words from the spiritual master. Compromise and flattery have no effect, where strong words are required. Yes, so that. In Bhagavad Gita, the material conception of life is condemned in so many places. One who thinks the country in which he is born is worshipable, or one who goes to holy places and yet ignores the sadhus there, is likened unto an ass. As an enemy is always thinking of doing harm, so the untrained mind will drag one deeper and deeper into material entanglement. Conditioned souls struggle very hard with the mind and with other senses. Since the mind directs the other senses, it is of utmost importance to make mind the friend. Okay. Next issue. Prabhuji, Ishu Prabhu is having network issues, so he will. Okay, Deepak broken. No problem. Yes, Deepak broken. yes, Prabhuji. Jitatmana prasantasya parmatma samahita shitoshna sukha dukkheshu tatha manapamanayo. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Bhagavad Gita 6.7. By training the mind, one actually attains tranquility, for the mind is always dragging us over non-permanent things, just as an unbridled horse will pull a chariot on a perilous course. Although we are permanent and eternal, somehow or other we have become attracted to non-permanent things. But the mind can be easily trained if it is simply fixed on Krishna. Just as fort is safe when it is defended by a great general. If Krishna is placed in the fort of the mind, there will be no possibility of the enemies entering. Material, education, wealth, and power will not help one to control the mind. A great devotee prays, when will I be able to think of you constantly? My mind is always dragging me about, but as soon as I am able to fix my mind on the lotus feet of Krishna, it becomes clear. When the mind is clear, it is possible to meditate on the super soul. The Paramatma or super soul is always seated within the heart, along with the individual soul. The yoga system involves concentrating the mind and focusing it on the Paramatma or super soul seated within the heart. The previously quote verse from Bhagavad Gita indicate that one who has conquered the mind and has overcome all attachment to non-permanent things can be absorbed in thought of the Paramatma. One so absorbed becomes free from all duality and false designations. Thank you. Yeah. Discuss few points and then we'll move on to the next chapter actually. तो Yes. एक तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ पे जो ट्रांसडेंटल सेंसेस का आया है ना, वो काफी इम्पोर्टेंट है. Transcendental senses and material senses. हाँ, तो वो क्या है, कोई मतलब कोई शेयर करना चाहेगा, मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की? क्योंकि हमें तो मटेरियल सेंस तो समझ में आता है ना, मैटर दिखता है. ये अगेन वो ये थिंक वाली बात है ना यहाँ पे. आई थिंक तो आई थिंक यहाँ पर जब आपके सेम सेंसेस व्हेन दे आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड दे बिकम ट्रांसेंडेंटल. दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हिच मे बी 100% रॉन्ग. एक्चुअली वो मेडिकल साइंस में ना, एक मेडिकल साइंस एक्चुअली आज भी उनके लिए एक मिस्ट्री है. होता क्या है कि जैसे कोई हैंडीकैप होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, तो उसे कभी कभी ये फीलिंग आती है कि मेरा हाथ है. और तो स्टार्टिंग में मेडिकल साइंस समझता था कि जैसे ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होगी जिनका मान लो 10-12 साल की उम्र में कोई एक्सीडेंट हो गया और अब कोई हाथ नहीं है, तो बोले उनको कभी कभी कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी, फिर बाद में उन्हें रियलाइज, तो उनको लगता है कि बस ये दिमागी तौर पे ही है. बट ऐसा देखा जाता है कि जो बचपन से भी अगर वैसा है, उसको भी मृत्यु तक वैसे ही लगता रहता है कि उसे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि अरे मेरा हाथ है. तो नारद मुनि इसका श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल देते हैं कि
जो है वो जब युधिष्ठिर महाराज से उनका डिस्कशन हो रहा है तो बता रहे हैं कि हम लोग ट्रांसेंडेंटल सेंसेस भी होते हैं। तो होता क्या है कि जब जीव इस संसार में आता है और मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट करता है तो सोल को ना माइंड के माध्यम से वो लगने लगता है कि द ओनली प्लेजर लाइज इन ग्रेटिफाइंग द सेंसेस ऑफ विच आर ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। तो जैसे आंख है ना हमारी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को दिखता नहीं है, बट देयर इज अ ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस मटेरियल आई आल्सो। तो जब सोल बॉडी में एंटर करती है तो उसे लगता है कि माइंड के माध्यम से कि इस मटेरियल आई को तुझे एंजॉय करना है, तो जो भी अच्छा लगे वो तू कर। और इंटेलिजेंस उसे वो कराने में लग जाती है हेल्प। फॉर एग्जाम्पल माइंड को लगा कि मुझे इस मटेरियल सेंस को एंजॉय करना है किसी भी तरह, एनी हाउ, कुछ भी देखो बस। तो इंटेलिजेंस बोलती है कि हाँ तू ऐसे इंटरनेट लगवा ले, या इस तरह से तू सिनेमा चला जा, या इस तरह से तू घूमने चला जा। तो इस तरह से इंटेलिजेंस उसके काम में लग जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि माइंड को ही बार बार बीट किया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे लाई करती है कि जैसे ही सोल बॉडी में आई, अब उसे माइंड को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि माइंड तो बोलेगा ही कि हाँ ठीक है। और क्योंकि माइंड ही यूज करके सोल इस संसार में आई थी, मटेरियल संसार में। माइंड अगर यूज नहीं करते, इंटेलिजेंस करते, यहाँ पे आते ही नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद भी जब माइंड कंटिन्यू रहता है तो वो डीपर और डीपर मटेरियल पूल में चल जाता है, गिरता चला जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल सेंसेस बोला गया है। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंस जो हम अगर इंटेलिजेंस यूज करेंगे तब हम उन एक्टिविटीज में एंगेज होंगे जैसे आपने बोला, जो कि ट्रांसेंडेंटल है, और फिर हम ट्रांसेंडेंटल सेंसेस को प्लेजर देंगे तो मटेरियल को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि द रियल हैप्पीनेस लाइज इन real happiness lies in gratifying transcendental senses. That's how we can give we can take real pleasure, and we can give pleasure to Krishna also. Correct na? That makes sense to all of us na? Yes, this is something really new, and I don't have any idea that how you got such kind of understanding about these lines, because this is completely different aspect. I cannot imagine. इसलिए प्रभुपाद जैसे आप देखेंगे ना, जैसे प्रभुपाद वर्ड भी वैसे ही यूज कर रहे हैं, जैसे इंटेंगलमेंट है और डिसएंटेंगल है ना। जैसे किसी को जंजीर से बांध देते हैं तो वो इंटेंगल हो गया, उसे जब जंजीर से खोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे इसे डिसएंटेंगल करो। तो देखिए वर्डिंग्स भी प्रभुपाद वैसे ही यूज किए हैं, जैसे कोई संसार में है ना जंजीरों से बांध दिया गया हो उसे, कह रहे से डिसएंटेंगल करो। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप ट्रांसेंडेंटल सेंसेस को करोगे तो डिसएंटेंगल हो जाओगे। मतलब पोजीशन भी वैसे रखी गई है जीव की कि भाई तू जंजीरों से बंधा हुआ है, तुझे निकलना है, ताकि उसे पढ़ते समय भी लगे कि हाँ मतलब भाई निकलो यहाँ से, हरि नाम करो। करेक्ट ना? Yes. Yes, Deepak, Prabhu, you want to say something? Very subtle faith we need to have for this kind of understanding. Yeah. ये Deepak, No, I don't have anything to say. ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नवीन प्रभु, आप भी एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे थे ना? नहीं प्रभु, मतलब बस वही बोल रहा था कि जो डिजायर फंक्शन है वो एक हाँ, फिर हमारा गीता में बहुत Actually- बात आएगा, अभी बहुत आना है, डोंट वरी अबाउट इट। एक्चुअली एक पॉइंट था मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे आपने वो पॉइंट हाईलाइट किया ना डिजायर वाला, तो मुझे याद आया कि एक बार स्वाति माता जी ने पूछा था एक क्वेश्चन कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भगवत गीता में भगवान बताए हैं कि भाई ये जो शरीर है ये तो क्षेत्र है, और जो आत्मा हुई वो क्षेत्रज्ञ हुआ। तो अब इस पे जो नवीन प्रभु जी आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, तो अब इस दोनों को हम जोड़ के अच्छे से समझ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन जनरल में हम देखते हैं कि एक क्षेत्र है, मतलब एक फील्ड है, वहां पे कोई किसान आया, तो किसान जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो वो फील्ड है वो क्षेत्र हुआ। ठीक है, अब होता क्या है कि किसान उसमें कोई बीज वगैरह डालेगा, फिर उसको वाटरिंग करेगा और वहां से फ्रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो अब ये एक जनरल है जो हम देखते हैं व्यवहारिक तौर पे। अब इसको इस यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, ये शरीर हुआ क्षेत्र, और आत्मा जब इसमें आ गई तो हो गया क्षेत्रज्ञ। अब डिजायर इसमें हुआ वो बीज, और इस डिजायर को वो जो सोल है वो इसको फीडिंग करती रहती है। जैसे स्मॉल डिजायर आएगी पहले स्टार्टिंग में, आई शुड अर्न मोर मनी, है ना, तो वो हल्की सी डिजायर आएगी। फिर क्या होगा कि कंडीशनिंग ऐसी होती चली जाएगी, आसपास के लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि भगवान भी हेल्प करते हैं ना जीव को, जो भी उसकी डिजायर होती है उसको, और भगवान हेल्प करते हैं कि नहीं यही सही है, यही सही है, ज्यादा पैसा कमाने ही लक्ष्य है, इस तरह से। तो वो क्या करता है कि कर्मों के माध्यम से उस डिजायर को और पानी देना शुरू करता है, वाटरिंग करता है, और फिर उसके ऊपर और एक्शन लेता है, तो फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं। तो जो फ्रूट्स है
दैट इज द कर्मा रिजल्ट, जो उसमें जैसे पायस है, पायस और इम्पायस हम लोग जो बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान उसको जहाँ वो भगवान एक्सप्लेन करते हैं भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो भगवान उसको फिर आगे एक एक करके वो पूरा समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी। और उसी कॉन्सेप्ट का एक पार्ट प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो माइंड है वो अपने डिजायर बनाना शुरू करता है, और डिजायर के अराउंड हम फिर लगे रहते हैं। फिर बहु जन्मनाम अंतर किसी एक जन्म में हमें रियलाइज होता है कि अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है, चले ही जा रहा है। Then he says, no, I don't want to gratify my material senses. I will gratify my transcendental senses. And in gratifying transcendental senses, material are already automatically satisfied. Correct, na? हाँ प्रभु जी, इसमें बस एक Did I cover करना चाहता everything? हूँ। Yes, please. तो जो उसमें लिखा हुआ था ना कि जैसे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जैसे आप संग करेंगे वैसे आपका माइंड होता जाता है, संग, राइट, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसमें एक ये क्वेश्चन है कि भाई चलो संग हम करते हैं, सुबह भगवान का जपा कर लिया हमने और भगवान का संग कर लिया, लेकिन देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर टोटली अलोन। तो उस समय क्या, तो माया इतनी प्रभावी है, इतनी इफेक्टिव है कि जो एक पल भी हम अकेले होते हैं तो उस समय भी वो हम पे अटैक कर सकती है। गॉन, सही बात है, एब्सोल्युटली एग्री ब्रो, एब्सोल्युटली। ये तो हम सबका एक्सपीरियंस भी है, एब्सोल्युटली। बस यही बोला। इसलिए आप जल्दी से डैलस बुला लो, मुझे यहाँ एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ भाई, तो इसीलिए तो वहाँ तो आपका एसोसिएशन। ठीक है, थैंक यू नवीन जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। एक दो पैराग्राफ तो कवर कर ही लेते हैं। कोई स्क्रीन शेयरिंग का तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, okay, moving on to next chapter, which is fifth one. Yoga is freedom from duality and designation. Sorry, किसका टर्न था मैं भूल गया। दीपक प्रो आपका था ना शायद? नहीं, ईशु प्रो का था। ओके, यस ईशु प्रो। This material world is a world of duality. At one moment, we are subjected to the heat of the summer season, and at the next moment, the cold of winter. Or at any one moment, we are happy, and at the next moment, distressed. At one moment, honored, and the next moment, dishonored. 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 In the material world of duality, it is impossible to understand one thing without understanding its opposite. It is not possible to understand what honor is unless I understand dishonor. Similarly, I cannot understand what misery is if I have never tasted happiness. Nor I can understand what happiness is unless I have tasted misery. One has to be transcendent such dualities. But as long as this body is here, these duality will always be here. Always be here also. Insofar as one strives to get out of bodily conceptions, not out of the body, but out of bodily conceptions. One has to learn to tolerate such duality. In second chapter of Bhagavad Gita, Krishna informs Arjuna that the duality of distress and happiness is due to the body alone. It's like a skin disease or skin itch. Just because there is itching, one should not be mad after it to scratch it. One should not go mad or even give up our duties just because mosquito bites us. There are so many dualities that one has to tolerate. But if the mind is fixed in Krishna consciousness, all these duality will seem to be insignificant. एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, पता है, भागवतम में 10th कैंटो में आता है, उसमें बता रहे थे कि मतलब हु कैन राइटफुली क्लेम द पोजीशन इन वैकुंठा। जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई इंश्योरेंस हो जाता है, हम लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं ना, तो मान लीजिए कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम इसे क्लेम नहीं करेंगे, मतलब उसमें ऐसा आता है कि यू कैन राइटफुली क्लेम। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई डुअलिटी को ना, इसको सिंपली टॉलरेट कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है, बुखार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अरे मैं तो मर गया, मैं चला गया, मेरा ये मर गया, अगर वो उसे टॉलरेट कर रहा है ये मान के कि नहीं मेरा पुराना सब कर्मा है,
और भगवान की सर्विस में एंगेज है, तो उसमें लिखा हुआ है कि ही कैन राइटफुली क्लेम, मतलब उसे कोई रोक नहीं सकता फिर वैकुंठ में जाने के लिए। तो वही बात प्रॉपर डुअलिटी के बारे में यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ और लेते हैं हम एक बार। नवीन प्रो, यू लाइक टू रीड और यू लाइक टू रीड एट द एंड ऑफ इट? Truly, Mataji can read. Okay, thank you. Yeah, Kanak Mataji, please. How is it one can tolerate such dualities? Janan Vijan Triptam Katasto Vijitridya Yukta Ite Yuchate Yogi Sama Lostra Kanchaha. A person is said to be established in self realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self controlled. He sees everything, whether it is pebbles, stones, or gold, as the same. Bhagavad Gita 6.8. Janan means theoretical knowledge, and Vijanan refers to practical knowledge. For instance, a science student has to study theoretical scientific conceptions as well as applied science. Theoretical knowledge alone will not help. One has to be able to also supply this knowledge. Similarly, in yoga, one should not have only theoretical knowledge but practical knowledge. Simply understanding I am not this body and at the same time acting in a nonsensical way will not help. There are so many societies where the members seriously discuss Vedanta philosophy while smoking and drinking and enjoying a sensual life. Sorry, Mataji. Uh, It will not help if only one has knowledge theoretically. This knowledge must be demonstrated. One who truly understands I am not this body will actually reduce his bodily necessities to a minimum. When one increases the demands on the body while thinking I'm not this body, then then of what use is that knowledge? A person can only be satisfied when there is Janan and Vijanan by side by side. ज्ञान विज्ञान side by side. Okay, Gyan Vigyan ज्ञान by side by side. Hare ज्ञान Krishna. मतलब वही नॉलेज एंड रियलाइजेशन, जो फुकन यहाँ बोले ना, ज्ञान हो गया नॉलेज एंड विज्ञान मींस रियलाइजेशन. Okay. Thank you, Mataji. So we'll stop here. We'll discuss now, so everyone can share their points. Yeshu, were you able to understand everything? I think you had some network problem. No, I have to reread again, Prabhuji. I missed some parts. But what I've observed in the last para, what Mataji is reading, that this is the one of the main reasons why Krishna continued to speak after second chapter of Gita. That he knows that in first chapter he finds the disease. Second chapter he diagnoses. He tells the truth that you are soul and not the body. Now he should stop because उन्होंने तो मतलब बीमारी का इलाज बता ही दिया कि सोल हो, but he continued to speak till 18th chapter. So उस सोल की नॉलेज को कैसे रियलाइजेशन में लाना है, this is how he speaks. कि जो थर्ड चैप्टर से लेके जो लास्ट चैप्टर के बाकी के 16 चैप्टर में, that is about how practically we can apply this the knowledge of second chapter. This is one of the argument raised by senior devotees. I like that point. Ki Krishna not only tell about the theoretical part, but he is also telling about how to practically apply this. And this is very interesting. Yeah. Amazing. Thank you, Yeshu. Yes, that's true. Yeah. We have some points. In fourth chapter, Prabhupada have explained Atma. What is the meaning of Atma? Mind, body, and soul. When we are at materialistic level, we are at body level. We uplift ourselves to mind level, and when we become completely spiritual, then we came to soul level. And also, Prabhupada have told that mind, if we have trained mind, then it is our best friend. If we have untrained mind, then it is our best enemy. So we need to understand how. It's important to understand. It's important to train our mind because otherwise it will become our best enemy. So and sharp words are required to cut mental association and mental attachments.
सो अगर मतलब कोई हमारे स्पिरिचुअल मतलब हमारे काउंसलर्स या फैसिलिटेटर्स अगर हमें शार्प वर्ड यूज कर रहे हैं या हमारे गुरु यूज कर रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड इट इज प्योर मर्सी ऑन अस। हमें कभी उससे रुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ना कि कड़े शब्द बहुत जरूरी है मेटल अटैचमेंट को काटने के लिए। उन्होंने चाकू का एग्जांपल दिया सीधा ना कि किसी चीज को काटने के लिए चाकू चाहिए रहता है, ऐसी मेटल अटैचमेंट को काटने के लिए तो चाकू जैसे ही शार्प वर्ड्स आपके ऊपर आ सकते हैं, तो भी प्रिपेयर हो। एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच आई मतलब that the world is full of dualities and the best part I think कि अगर संसार में दोहरापन नहीं होता तो शायद इस भौतिक संसार में हम यहीं पड़े रहते, यहीं फंस जाते। तो अगर सुख है तो दुख है ना, खुशी है, तो वो बहुत बहुत जरूरी है दोनों चीजें होना, है ना। अगर दुख नहीं होगा तो हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, और सुख नहीं होगा तो दुख की नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं ना, तो वी शुड बी, अगर ये सब पढ़ने के बाद वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा दैट ही, मतलब हाँ ठीक है मेटल संसार बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट कृष्णा हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग कि हाउ वी कैन कंट्रोल इट एंड गेट आउट ऑफ इट। सो द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी इज वेरी गुड फॉर डिवोटीज। यस प्रभु, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ब्रो, द वर्ड ऑफ डुअलिटी। मैं वो क्विकली आपको दिखाता हूँ, मैं ग्रुप पे भी डालूंगा। ये जो पॉइंट था ना डुअलिटी वाला, उसको जैसे हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं ना कि अरे कैसे करना है क्या करना है, तो एक्चुअली इसमें बताया गया, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो ये 10:48 है। उसमें बोल रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू बेस्टो योर कॉजलेस मर्सी अपॉन हिम ऑल द वाइल पेशेंटली सफरिंग। सी ये दिस इज द पॉइंट एक्चुअली जो डुअलिटी से आता है। ऑल द वाइल पेशेंटली वेटिंग, पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स। जरे मेरा पाप आ गया भाई, पुराना कर्मा है इसीलिए दुख भोग रहे हैं, तो जो चुपचाप उसे बर्दाश्त करता रहता है, ज्यादा शोर शराबा नहीं करता है, ये मान के कि नहीं मेरा पुराना है, भगवान धीरे धीरे काट रहे हैं, तो ही बिकम्स अ राइटफुल क्लेमर कि भाई मुझे वैकुंठ चाहिए। यस, थैंक यू ब्रो। उदित ब्रो। थैंक यू। यस दीपक ब्रो, सॉरी थोड़ा स्ट्रेच हो गया आज। यस yes, no problem, Roji. Roji, I just have a one point, like we cannot understand misery if I never tasted happiness. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे हम रियल हैप्पीनेस को नहीं समझ सकते जब तक हम नहीं मतलब मिजरीज को अच्छे से ना झेल लें। और इसलिए भी मुझे लगता है कि इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरे धाम में आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, क्योंकि उससे पहले वो जितने भी मिजरी है वो पूरा सब अनुभव समझ करके आ चुका रहा है। है हाँ तो उसका दोबारा कभी सही मन बात ही है। नहीं होगा, जैसे पहले हो जाता है, मतलब तब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो पहले हो जाता है माइंड में वो थॉट आ जाता है कि यार मैं अकेले एंजॉय करूंगा, लेकिन फिर कभी नहीं आता क्योंकि एक और मटेरियल वर्ल्ड से होकर के आ गया ना। क्या बोलते हो, दूध का जला छाछ कोई फूंक मार मार के पीता है। यस प्रभु जी, तो वो सब झेल लिया है मटेरियल वर्ल्ड में, तो अब थोड़ी ना वापस जाएगा। यस यस, थैंक यू दीपक ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम। यस, कनक माता जी, स्वाति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी वही वाला पॉइंट सबसे ज्यादा अटैक किया है, डुअलिटीज वाला, उस पे ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है। ओके मतलब जब इंसान के पास दुख होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन जब खुशी आती है तो ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें भूल जाता है। तो हमें वो चीज नहीं भूलनी चाहिए, वो ही पूरा सार है कि आपको वो चीज याद रखनी चाहिए कि अभी आप 10 मिनट पहले ही थे जो बोल रहे थे कि अभी जीवन बेकार है। तो वही है, जब कोई किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं लोग क्या है, यही तो है जीवन, यहाँ मिट्टी में मिल जाना है, और वहीं बस गाड़ी में बैठते ही कुछ और ही होते हैं। तो वही है, हमें मतलब डुअलिटीज इतनी ज्यादा है, हम लोग उसको एक बॉडी लेवल पे ही समझ पाते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो यही सारे रीजन है हमारी मिजरीज का। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। स्वाति होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये दो पॉइंट बहुत अच्छे लगे आज के डिस्कशन में। वन इज व्हेन प्रभुपाद वाज टेलिंग अबाउट द माइंड एंड हाउ टू कंट्रोल इट and with a good association. So association is very important, and
Second thing is about that everyone discussed about the duality of mind Duality. and Hmm. तो वो मैंने एक लेक्चर में सुना भी था कि जहाँ साधु के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे, तो उसमें बताया था कि हु इज फ्री फ्रॉम डुअलिटी इज एक्चुअली अ साधु। तो वो इसलिए डुअलिटी से फ्री होना बहुत जरूरी। आई थिंक इट इज वेरी टफ। जैसे कनक माता जी बता रही थी अभी, तो मतलब जैसे हम बोलते हैं, अगर सपोज जब किसी की डेथ हो जाती है तो सब लोग सुन रहे होते हैं वहां पे राम नाम सत्य है, और सुन के भी एट द वेरी मोमेंट वी डोंट अप्लाई एक्चुअली। तो हमें पता है कि वही सत्य है, फिर भी राम नाम कोई लेता नहीं है। सत्य कह के चले जाते हैं, फिर असत्य में लग जाते क्या हैं। कहते हैं, हाँ, फिर से लग जाते हैं उसी में। तो एक्चुअली विच इज द एवरीवन थिंक्स लाइक, मतलब सब लोग लगे हुए हैं ऐसे ही, सुनते भी हैं, बट उसके बाद भी अप्लाई करने वाले तो देयर आर वेरी रेयर सोल्स। रेयर सोल्स, या प्रभु जी, वो कंडीशनिंग इतनी खराब है कि वो जब राम राम सत्य बोलते हैं तो लगता है दिस इज आल्सो अ रिचुअल, नथिंग राइट। ऐसा तो बोला जाता है। बहुत टाइम बाद हम रिलेट कर पाते हैं, अच्छा इस लाइन का ये मतलब है कि राम नाम ही सत्य है। हाँ, राइट। और कुछ सत्य नहीं है एट द टाइम। ये भी पता है सत्य बोलो गत है, ये भी पता है, उसके बाद भी गत में नहीं लग रहे। आजकल तो प्रभु जी मैं देखता हूँ लोग ऐसे हो गए हैं कि कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे मैं अपने हिंदू में, मतलब हिंदू में बता रहा हूँ कि जैसे राम नाम सत्य है तो ये बहुत पहले चलता आ रहा है और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि मरने पे भी ऐसे बोलते रहते हैं, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अरे कोई जय माता दी बोल रहा है जो माता का भक्त है, मतलब वो कुछ भी घुसा रहे हैं, मतलब कहीं भी अपनी अपनी समझ से। तो ऐसा रहता है। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छी लगी कि डुअलिटी से एक फायदा और है ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अ, वैकुंठ से जीव का पतन हुआ भगवान विष्णु से, हाँ हाँ तो वो इसलिए हुआ कि शायद उसे ना वहां पे मिजरीज नहीं है। तो उसे लगता है कि मतलब मेरी नेचर ऐसी है कि मैं और एंजॉय कर सकता हूँ इससे बेटर। तो जब वो मेटेरियल वर्ल्ड में आता है इतना ठुकता पिटता है ना, और फिर वापस स्ट्रगल करके वैकुंठ जाता है, तो वहां पे उसे ऐसा लगता होगा कि मतलब इससे बढ़िया कुछ था ही नहीं। तो शायद इसलिए वो शायद वहां से वापस नहीं आता, वैकुंठ चला जाता वो। Okay, thank you so much everyone for joining and Thank you so sharing your much. input. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare. Oh, sorry. Ishubhu, you have something? आपका No, हाथ? No, Prabhu. Prabhu. Okay. I'll share at some time. It's not necessary, not related to this. Okay, okay. वंशाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। Yeah. Krishna, thank you.